हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की स्टैटिस्टिकल जो फॉर्म है उसको हमने डिस्कस करके आयरिंग इक्वेशन हमने उससे डिराइव की थी that was used to determine the rate of chemical reaction in terms of enthalpy of reaction and entropy of reaction. Entropy is very important in the stage of activation. So activated complex, whether the activated complex is in more orderly form than the reactants or reactants are more orderly arranged as compared to the activated complex. ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली पिछले लेक्चर के अंदर। समझ आ रही है ना आपको? तो आज जो है वो हमारा जो नेक्स्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी में दो हमारे पार्ट्स जो है वो रहते हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला और नेक्स्ट जो है वो कैटलिस्ट डिपेंडेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज जो है वो हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ईद के बाद हम फेस टू फेस क्लास करेंगे। तो as the temperature increased, the rate of reaction also increases. Sometimes we see the exponential increase in the rate of chemical reaction. Sometimes we see the linear increase in the rate of chemical reaction. And it is well known that for every 10 degree rise in temperature, the rate of chemical reaction increases twofolds. Rate of reaction increases twofolds. Rate of reaction double हो जाएगा for every 10 degree rise in temperature. So this is a general observation for the ordinary chemical reactions, especially for the elementary reactions which are completed in single step. But in case of composite reaction which are completed in several steps, and in order to know the composite reactions, we will have to give the detailed pathway and detailed mechanism of the reactions. So in each and every step, we will have to find the rate determining step, which is slowest step, and we will have to identify the rate determining step and its thermochemical nature, whether it is endothermic or exothermic. If the rate determining step is endothermic, then rate of chemical increases linearly, as I have said earlier. So if the rate of chemical reaction, if the rate determining step is exothermic, then rate of reaction show the negative temperature coefficient. The rate of reaction will be decreased by increasing temperature. It will become reverse. So for such type of reactions, I will give you the example, the formation of nitrogen dioxide from nitric oxide. If the nitric oxide undergoes oxidation, so it produces NO2. So this is the reaction that shows negative temperature coefficient. That shows the negative temperature coefficient. So why this shows a negative temperature coefficient for the oxidation of nitric oxide? When we increase the temperature, the rate of reaction decreases. Why it is so? That if we will write the detailed pathway of this reaction, so its rate determining step is exothermic. That is why if we increase the temperature, the rate of reaction decreases instead of increasing. So all this type of activities related to the dependence of chemical temperature on the rate of chemical reaction will be discussed. And the well-known empirical equation is Arrhenius equation.
So Arrhenius equation is a fundamental equation which is derived from the, आपको मैंने बताया था, उसको हम कहाँ से derive करते हैं? Bond-Hoff equation. Bond-Hoff equation is the basis. Arrhenius equation is an empirical mathematical equation which relates the rate of chemical reaction or rate constant with the energy of activation in this way. So this is well-known empirical equation which is known as Bond-Hoff equation. This relates the rate constant or a rate of chemical reaction with the activation energy, temperature. So this is the pre-exponential factor. अच्छा, this K rate constant भी हम इसको कहते हैं और rate of reaction. Both terms are used at the same time. Rate constant or a rate of reaction is the same thing. So A is the pre-exponential factor, and this is related with the activation energy. This pre-exponential factor is called Arrhenius constant. This is related with the entropy of the reaction. Entropy at the activated state and reactants which are in quasi-equilibrium with each other. So this activation energy and this exponential equation can be changed into. So this equation can be changed into the straight line equation that taking the log of K is equal to log of A minus EA over RT log of E. This is this exponential equation and this is changed into the logarithmic form. Log natural, not common log. So log of K is equal to minus EA over RT. Log of E is equal to 1. Log E is Euler factor. Euler number 2.718. If we will take the logarithm of this, it is equal to 1. Therefore, log of E is equal to 1. So this equation will take this shape in this form. So this is straight line equation. Y equal to mx plus c. This is standard straight line equation. This is the intercept and this is the slope or gradient, and this is 1 over t is the x-axis. 1 over t is x. This is m, slope of the line. T is the intercept. If we will draw this equation, straight line equation, we may get this type of profile of this equation. So this is y-axis, this is dependent variable, and 1 over t, temperature, absolute, it is independent variable. So this is negative slope. Therefore, we will get this type of straight line. अगर इसका पॉजिटिव होता तो हम इस तरह की स्ट्रेट लाइन लेते. So it has a intercept, therefore it will not pass through the origin. अगर ये intercept ना हो तो ये origin से pass हो. तो अब इसका ये जो gradient है, this gradient जिसको हम differential भी कह सकते हैं, gradient भी कह सकते हैं, slope भी कह सकते हैं. This gradient is equal to, इसको मैं कहूँगा m slope. This is equal to minus EA over R. So, and this intercept, the y-axis, on y-axis, where the line intersect the y-axis, this value is called log of A, which is intercept. So, this slope is equal to minus E over R. This slope, when we will draw the line, this slope has a numerical value. क्या आएगी ये ऐसे? Differential of temperature, and this is differential of log of K. ये हमने log of K इधर लिया होगा. तो this divided by this, इसकी एक numerical value आ जाएगी. And if we will put this numerical value and multiply with R, we will get activation
activation energy. So activation energy is very easy to calculate from the straight line equation graph, from the value of the gradient or a slope or a differential of this equation, which is constant throughout the line. जहां तक line है straight रहना है, ये gradient इसका same है. So this equation also gives us information about the a pre-exponential factor. ये देखिए ये जो a था, और a आपने पीछे आयरिंग इक्वेशन देखें जो उस दिन मैंने प्रूव करवाई है पिछले आपको सैटरडे वाले दिन. This a is related, pre-exponential factor is related with the entropy function. तो entropy function अगर आपने फाइंड करना है तो आप log of a की भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, log of e will be some numerical, suppose it is 0.5. तो इसका एंटी लॉग ले लें. एंटी लॉग ए जो है ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 0.5. तो एंटी लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, a इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0. तो e कितना होता है 2.718. पावर अगर 0.5 है तो you can easily calculate, and this will be equal to the entropy function which is involved in the reaction rate. So if the activated complex is more orderly formed than the reactant, the rate of reaction will be high. So if the rate of chemical reaction जो है वो टेम्परेचर से उसकी अरेंजमेंट, उसकी एंट्रोपी फंक्शन जो है वो रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कम होगा, तो आप टेम्परेचर अप्लाई करें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज हो. तो ये हमने एक ऑफशूट्स जो है वो देखा है. तो आयरिंग इक्वेशन पे हम आपके सामने मैं लिखता हूँ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू kBT over h e raised to the power delta s over r. ये स्टेरिक जो है एक्टिवेशन स्टेट के लिए मैं लिख रहा हूँ, e raised to the power minus delta h over RT. This is entropy of enthalpy of activation and this is the entropy of action. This factor is called, ये मैंने अभी आपको बताया, this factor अगर मैं इस पूरे फैक्टर को entropy function e raised to the power delta s over r into Boltzmann constant, temperature and h. If temperature is kept constant, Boltzmann is a constant, this is the flux constant and this is the entropy function. इसको अगर आप a रख लेते हैं, e raised to the power delta h in enthalpy of activation, if it is equal to energy of activation, तो आपकी इक्वेशन वही आ जाएगी जो मैंने अभी फाइंड की है. Then Eyring equation can be changed into the Arrhenius equation. सिर्फ फर्क क्या है, ये जो हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पूरे फैक्टर को, ये जो हम इससे देख रहे हैं. तो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज वेरी मच रिलेटेड विद द टेम्परेचर और टोटल हीट कंटेंट, एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिलेटेड विद द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड एनर्जी. ये पैरामीटर उसके साथ रिलेटेड है. तो ये हम इसकी जो वैल्यू है लॉग ऑफ, इसी इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिख लूं आयरिंग इक्वेशन को, के और ये टी ऊपर है डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा के बी ओवर एच ई रेज टू द पावर डेल्टा एस ओवर आर और ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एच स्टेरिक ओवर आर टी. If I will take the logarithm of this equation, log of k over t will be equal to log of kb over h e raised to the power delta s over r plus log of e raised to the power minus delta h over RT. So if we simplify this equation, log of k over t is equal to log of kb over h plus delta s over r log of e
माइनस डेल्टा एच। ये अगर आप गौर कर लें, लॉग ऑफ के ओवर टी, log of kb over h, kb is Boltzmann constant, this is Planck's constant, plus log of E is equal to 1 delta S over R minus delta H over RT। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y is equal to, ये पूरे को आप m कह, सॉरी ये पूरा का पूरा c है, माइनस डेल्टा h ओवर r जो है ये क्या है, m है, और 1 ओवर t यहाँ पे भी x है। तो आप ये देखें कि मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, इसको आप प्लॉट कर, 1 ओवर टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गई, लॉग ऑफ के ओवर टी ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर आ गया। और अब बिल्कुल उसी तरह स्ट्रेट लाइन फिर आएगी इक्वेशन, इसका जो स्लोप और ग्रेडियंट होगा m, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ओवर आर। नो ये जो स्लोप है, पिछली जो आर्हेनियस इक्वेशन से ग्रेडियंट और स्लोप ने हमें एक्टिवेशन एनर्जी दिया था। अब इफ वी मल्टीप्लाई दिस numerical value of gradient or slope with gas constant, we will get the enthalpy of activation। ये देखिए मजे की बात, ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, and this we can find the enthalpy of activation very easily from the gradient of the straight line plotted using the Eyring equation। और पिछला जो था वो Arrhenius equation, ठीक है। Eyring equation was derived by using the statistical mechanics to the transition state theory, and Arrhenius equation is a general form of equation which shows the effect of temperature on the rate of chemical reaction। तो यहाँ से जो आपका इंटरसेप्ट ये वैल्यू है, ये इंटरसेप्ट, यहाँ इंटरसेप्ट आपका जो c है ये किसके इक्वल आएगा, log of k b over h प्लस डेल्टा एस ओवर आर। ये देखिए मजे की बात। अब के बी क्या है, कांस्टेंट है, एच क्या है, ये भी कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये तीन कांस्टेंट है। और सी की वैल्यू न्यूमेरिकली वी कैन गेट फ्रॉम दिस वैल्यू, ये जो वाई एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ ये इंटरसेप्ट कर रहा है, ये लाइन कट कर रही है, ये वैल्यू न्यूमेरिकल आ जाएगी, 2 3 5 जो भी आती है। ये numerical value, ये numerical value, ये numerical value, ये numerical, all these numerical values will be substituted in this equation and we can easily get the entropy of activation। आप entropy of activation बहुत easily find कर सकते हैं किसी भी reactants का activated state के अंदर, किसी भी state के अंदर आप entropy of activation आप यहाँ से calculate करें, enthalpy of activation आप gradient से find करें और सब्स्टिट्यूट करें, you will get the rate constant value at specific temperature। ये आप बड़े आराम से, बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये 2 3 चीजें आप ध्यान में रखें।